हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर्स। और अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं क्लास 9 हिस्ट्री के सेक्शन 4 ऑफ चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन, दैट इज डिड वीमेन हैव अ रेवोल्यूशन। क्या विमेन की कंडीशन में भी कुछ चेंज आया? बिकॉज आफ्टर द रेवोल्यूशन वी फाइंड दैट इन फ्रांस a republic form of government was formed over there. Monarchy was abolished and obviously France had become a republic. यानी कि फ्रांस के अंदर अब जो भी हेड ऑफ द स्टेट था, he was to be elected by the people. Though the right to vote was given only to the active citizen. हालांकि right to vote जो दिया गया था वो केवल और केवल active citizens को दिया। Women की condition क्या थी? तो first of all we must discuss about the condition of women in pre-revolutionary period. यानी कि pre-revolutionary period में फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन से पहले विमेन की कंडीशन कैसी थी? So first of all, women did not have an access to education. Access to education. Only women from the noble families and from prosperous families of the third estate could have some education at the convent. यानी कि बेसिकली क्या होता था, जो हमारी नोबल फैमिलीज से जो गर्ल्स होती थी या विमेन होती थी, या फिर जो हमारी थर्ड एस्टेट की जो प्रॉस्पेरस जो फैमिलीज थी, उनकी वहां से जो विमेन होती थी वो क्या करती थी? दे कुड हैव सम एक्सेस टू एजुकेशन, दे कुड हैव देयर फॉर्मल एजुकेशन एट द कॉन्वेंट। कॉन्वेंट यानी कि एक ऐसा स्कूल जहां पर एक अटैच्ड चर्च भी होता था। एंड आफ्टर दैट you can say after this their marriages were to be fixed by their parents. जो उनके पेरेंट्स होते थे वो उनके मैरिजेस को क्या कर देते थे? फिक्स कर दिया करते थे। बिसाइड्स दैट, जो हमारी लेस प्रॉस्पेरस जो फैमिलीज होती थी, उनकी विमेन को क्या करना होता था? दे हैड टू वर्क। सो द विमेन from less prosperous, or you can say from the poor families, less prosperous families in the third estate, had to work
for getting some additional incomes, some additional incomes for their families, for their families, right? तो उनको जो है वो एज अ टेलर का काम करती थी या लोगों के घरों में जाकर बर्तन साफ किया करती थी, खाना बनाना है, कपड़े धोना है, या मार्केट में जाकर फ्रूट्स बेचना है या फ्लावर सेलिंग करना है. दैट मीन्स द नॉर्मल वर्क्स दैट वी कैन सी द विमेन आर एंगेज्ड इन द प्रेजेंट टाइम. लगभग लगभग वही सारे काम विमेन जो फ्रांस में थे उस समय उनको करना पड़ता था. दे डिड नॉट हैव द राइट टू वोट. विमेन did not have the right to vote. Have the right to vote. When the revolution was happened, जिस समय ये revolution हुआ उस समय women ने revolution में actively participate किया. The women, they had actively participated in the revolution. और उनको ये उम्मीद थी कि आफ्टर द रेवोल्यूशन जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी फ्रांस के अंदर वो उनको वोटिंग राइट देगी, उनको सोसाइटी में एक इक्वालिटी मिलेगी, उनका एक इक्वल ट्रीटमेंट होगा, यानी कि उनका जो एक स्टेटस है सोसाइटी के अंदर वो इंप्रूव होगा. वो भी ये अधिकार पा पाएंगे कि वो जो भी पॉलिटिकल ऑफिसेस हैं उनके लिए वो इलेक्ट हो सके, उनको एजुकेशन का राइट भी मिलेगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. एज वी नो दैट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 द विमेन दे वर प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ पैसिव सिटीजन्स. उनको वोट देने का राइट नहीं था, राइट. सो दिस वाज व्हाट द विमेन दे हैड फॉर्म्ड. विमेन formed their political clubs, political clubs to demand the right to vote, and equal access to education, and the right to get elected to important political offices. As we know that women, they were placed in the category of passive citizen, so they were got disappointed. वो बहुत ज्यादा निराश हो गई. उन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब्स को फॉर्म किए और ये डिमांड किया कि उनको भी राइट टू वोट मिलना चाहिए, उनको एजुकेशन का राइट मिलना चाहिए, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी डिमांड किया कि उनको जो है वो पॉलिटिकल ऑफिसेस को होल्ड करने का भी राइट मिलना चाहिए. Now, so the women, they had formed their own political clubs to discuss the issues which were related to them. और इन क्लब्स के थ्रू उन्होंने अपने डिमांड रखी. कौन कौन सी डिमांड रखी? कि उनको राइट टू वोट मिलना चाहिए. उन्होंने डिमांड रखा कि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए टू गेट एजुकेशन, एंड ऑल्सो दे हैड डिमांडेड कि उनको भी ये राइट होना चाहिए कि वो भी पॉलिटिकल ऑफिसेस के लिए इलेक्ट हो सके. There were several women's club, and the most important club during this period, that was the Society of Revolutionary and Republican Women, and
Republican women was the most famous women's political club. Now, the revolutionary government had taken several steps to improve the condition of women in France. जो revolutionary government फॉर्म हुआ आफ्टर द revolution, इसने विमेन की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए. सो द स्टेप्स taken by the revolutionary government, government to improve the condition of women, in France. So first of all, what the government has done, the government had set up the state schools for the girls' education, and the girls' education was made compulsory. गवर्नमेंट ने स्टेट स्कूल्स यानी कि गवर्नमेंट स्कूल्स को सेटअप किया और गर्ल्स की एजुकेशन को वहां कंपलसरी कर दिया गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल state schools were opened and girls education was made compulsory. इसको क्या कर दिया गया? कंपलसरी कर दिया गया. Another step. Marriages were required to be registered into a contract as a contract under the civil law entered at will. यानी कि जो भी मैरिजेस थी, मैरिजेस को कंपलसरी किया गया कि उनका रजिस्ट्रेशन हो अंडर द सिविल लॉज, एंड दे वर टू बी रजिस्टर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें अपनी मर्जी से विमेन जो है वो डिसाइड कर सकती थी. Thirdly, divorce was made legal and applied to both men and women. Earlier, the women, they did not have the right to divorce their husbands. Now, अब यहां पर डिवोर्स को उन्होंने क्या कर दिया? लीगल बना दिया, और मेन और विमेन दोनों ही क्या कर सकते थे? डिवोर्स दे सकते थे. Fourthly, fathers could not force their daughters for marriages. फादर भी अपने बेटियों को मैरिजेस के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे. राइट? देन ट्रेनिंग
was given to women to get employment or to start a business। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं उनका स्किल ट्रेनिंग किया गया, स्किल डेवलपमेंट किया गया, जिससे कि वो बेटर एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सके या वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। So this was what the revolutionary government has done, but during the reign of terror, as we had discussed earlier as well, about what Maximilian Robespierre has done. He had placed several restrictions. All the political clubs led by women, they were banned. And the women, they were once again subjected to the authority of their parents or husbands. फिर से women को उनके husbands या उनके fathers के authority में कैद कर दिया गया। Right? Therefore, the women, they had to struggle for long for getting equal rights, especially the right to vote. Finally, the right to vote was granted to women in France in 1946। यानी कि women को फ्रांस के अंदर जो right to vote मिला वो 1946 में मिला। Right? So this is what we have to remember, that the women in France got the right to vote in 1946। So this is what about this whole topic। women को फ्रेंच रेवोल्यूशन से अगर देखा जाए तो डायरेक्टली उनको कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। वट एवर दे हैड एक्सपेक्टेड दे डिड नॉट गेट दैट, दे वर डिसअपॉइंटेड। उन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब्स को फॉर्म किया, अपनी डिमांड्स रखी कि हमको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए एजुकेशन के लिए, हमको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए वोट देने के लिए, हमको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए कि हम भी पॉलिटिकल ऑफिसेस को होल्ड कर पाए। राइट? सो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखते हैं तो हमारा जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई थी फ्रांस में इसने जो है वो कुछ स्टेप्स जो हैं विमेन की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए वहां पर इंट्रोड्यूस भी किए। लेकिन लेटर ऑन व्हाट डू वी फाइंड कि जब हमारा मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का शासन आया, जब उसका रूल आया तो उसने फिर से विमेन के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, उनके पॉलिटिकल क्लब्स को उसने बैन कर दिया। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ विमेन, द रेवोल्यूशनरी विमेन who were not agreed with the ideas of Robespierre, they were also arrested and they were also executed or guillotined। और इसके बाद भी अगर हम देखते हैं तो नेपोलियन, he was also not in favor to give the right to vote to women, ठीक है। एंड therefore the women they have to struggle for long, काफी लंबे समय तक उनको स्ट्रगल करना पड़ा, करीब 150 साल उनको स्ट्रगल करना पड़ा to get the right to vote, and finally they got the right to vote only in 1946। so this is what about this whole topic। I hope कि ये पूरा टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर सकोगे। these points will help you out a lot। I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज 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 वीडियोस को लाइक करिए, अच्छा लगा है तो उस पर कमेंट करिए, और इन केस अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जो भी बच्चे क्लास 9th में हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग अहेड।